गुड इवनिंग 23rd अक्टूबर है आज एंड दिस इज द ट्रेड प्लान फॉर 24th एंड द डेज आफ्टर 24th. um this is going to be a little longer video. Please bear with me. I'll try to explain few things which um, are important और जिसके कारण अक्सर लोग लॉसेस कर जाते हैं और डायरेक्शन नहीं समझते हैं. So today I like to cover that part in addition to the regular stuff. So it's going to be an informative learning video. पेशेंस से देखिए, सीखेंगे. स्किप कर करके देखेंगे तो नहीं सीखेंगे. आज क्या हुआ मार्केट में? आपके सामने ब्राउजर में सारे डिटेल हैं. ये मनी कंट्रोल का वेबसाइट है, इसको बुकमार्क कर लीजिए. आने वाले टाइम में इसको डेली शाम को देख लीजिए और आपको मालूम पड़ जाएगा कि मार्केट में आज क्या हुआ. ये देखिए, 23 तारीख तक यानी आज तक 92,000 करोड़ रुपया एफआईआई ने बाहर निकाल लिया है. Today's exit was 5,600 crores and addition in the market was 6,000 crores by DIIs. Like yesterday, the addition was 5,800 crores and withdrawal was 3,900 crores. DII is pumping money and trying to keep the market afloat. But FII is not interested. This is the net position of the FII very clearly. The same data is available at NSE website also, I'm sure, but मुझे यहाँ पे ज़्यादा समझ में आता है तो I prefer this here. There are other software tools also that you can use and that's also fine. More important is to understand that FII market से पैसा निकाल रहा है. Trend has not changed. Irrespective of the green candle today, trend has not changed. Okay, trend is down. अब आते हैं चार्ट पे. लाइए आपको चार्ट पे दिखाते हैं कि आज क्या हुआ और आज की कैंडल को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप गलती कर जाएंगे. ऑल राइट, कैंडल, here we are. Give me a second. This is the candlestick patterns and the trading view. देखिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मार्केट ने आज क्या, निफ्टी ने क्या किया आज. मैं इसको आपको थोड़ा सा और साफ करके बताता हूं. This is where market ended yesterday and this is where the market ended today. Are you seeing the market ended even lower than what where it ended yesterday? तो ये नीचे बंद हुआ है निफ्टी. अच्छा, बैंक निफ्टी देख लो. बैंक निफ्टी में क्या स्टेटस है. आई एम जूमिंग इन सो दैट यू अंडरस्टैंड द फाइनर नुआंसेस. बैंक निफ्टी ended here yesterday and it ended here today. So it has not even been able to go beyond yesterday's close. If you understand this, let me remove this and come back to the broader chart. If you see, Nifty was down by 0.15 minus and Bank Nifty was down by 0.04 minus. Broadly more or less वहीं पे ही है, लेकिन अभी भी नीचे है, वीक है. But the close versus close is closing in, if you can say that. मतलब ये हुआ कि अब फॉल जो है थोड़ी रुक रही है, लेकिन एफआईआई ने तो पैसा निकाल लिया है. सो इफ एफआईआई इज एग्जिटिंग, why is the fall stopping? You need to understand a lot of things.
First thing, let's focus on Nifty as I said because always मेरा focus जो होता है स्टडी का हमेशा निफ्टी होता है. इफ यू कैन सी माय कर्सर, ये शोल्डर था, ये हेड था और ये दूसरा शोल्डर था और ये शोल्डर का भी ब्रेकडाउन हो गया है और टारगेट जो है वो नीचे है. ठीक है, 23 समथिंग, 23,100 समथिंग. सो ब्रॉडली आई हैव सेड between 23,000 23,100, 23,000 से लेकर के 23,300 ब्रॉडली लेवल्स हैं जहां पे निफ्टी टच कर सकता है इवेंचुअली. आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल दैट यस्टरडे, between 23 and 23,300. But where is the immediate support? The immediate support lies at 24,100. You will see this pivot. और उससे पहले एक टेम्पररी सपोर्ट आ रहा है एट, यहाँ पे पता नहीं फिगर क्यों नहीं आ रही है पिवट की, बट यू विल गेट इट. 24,330 अप्रोक्सीमेटली पे ये पिवट है और ये 24,100 के आसपास की पिवट है. दिस इज वेयर द present swing is likely to take a take a clear support, 24,100 and 24,300 on the intermittent basis. If that is so, what was today's low? Today's low you can see above top left side में OHLC values दी हुई हैं, open high low close. So OHLC के हिसाब से low was 24,378. It is rather close to a support. ठीक है, 24,378 लेवल है और ये आपका यहां पे सपोर्ट दिख रहा है. तो एक तो आप ये समझ लीजिए कि यहां पे थोड़ा सपोर्ट आ सकता है. दूसरा, this is our retracement drawn and this is our support line called 24,417. पहली बार जब भी किसी लेवल पे मार्केट आता है तो जनरली सपोर्ट लेता है, जनरली. So this is the first time it is touching this level, so there is a fair chance it will get support here. This is reason number 2. ठीक है, reason number 3, and that's the most important thing that you need to also look at, that's to do with candlestick pattern. What candlestick pattern do you see here? Today's green candle. And not just for Nifty, in fact, Banknifty has a similar pattern. If you get confused, let me place the cursor here. You read the OHLC values. What is most important here is, where did Nifty open? 24,378.15. What was the low? 24,378.10. Same है यार, 0.05 का difference है. Is the same. So for all practical purpose, you can say the open is equal to low. Understand this. Similarly, on Bank Nifty, let me place the cursor here. What was the open? 51,117.8. What was the low? 51,107.9. Once again, almost at the low. Open is equal to low. There's a slight difference of probably, 4-5 points, but that can be ignored. So for all practical purpose, this was open is equal to low. Now please understand the meaning of this. Understand what is happening at the battlefield. Battle, you understand battle? Fight, battle, war. Intraday is fight. This swing is the battle. And war is the overall Nifty direction that is on the run. We are on a bull run on the
year to year basis. That's a war. We are winning the war there. मार्केट में पैसा सबका बनता है अगर आप बैठे रहो तो पोर्टफोलियो में खास करके आई एम टॉकिंग अबाउट द बैटल what was played out today was the last fight of the battle. Let me explain this. The bulls and the bears at t is equal to 0, the moment market opened, it opened here. First, first tick at 9:15.0000 was here. And after that, bulls took charge. For the first time, bulls took charge. They ensured that the market is not taken down by the bears, which was the case thus far, all this while. You see? Now, for the first time, bears were weak in the morning, although the day started with a gap down, slight gap down, but bulls took over and took this candle all the way up here to 24,604, broadly 24,600. 24,600 तक निफ्टी को बुल्स लेके गए, but that was where bulls experienced rejection. That is where their petrol finished, their fuel dried up, and the market started collapsing again. You'll see this in the 4 time frame chart. I've said it many times that you should watch it in 4 time frame chart. If you do not have the layout, ladies and gentlemen, it is costing you and you have no idea. Please create a 4 time frame chart. If you do not have a paid version of TradingView, which will be required, use any other platform like, Zerodha, Dhan, Grow, whatever. I don't know, Upstocks. Use any platform to make this into a 4 window layout. Open is equal to low. Bulls took the market higher to 24,600, but after that they gave up and bears once again took charge. I'm explaining you the narrative of what happened today. Please listen to this very carefully to understand the psychology of the fight which happened today. The bears took over. They actually ensured that all this while the bulls were taking the market to high, they actually brought it down once again. But there was a difference this time. Think. The difference was that the bears were not able to go beyond the T0 level, which means wherever the market opened, they could not touch it. कबड्डी देखिए कैसे खेली जाती, ये कबड्डी कबड्डी करते हुए आए लेकिन एक लेवल के बियॉन्ड वापस नहीं जा पाए. Bulls were able to defend the low that they made open, that they made in the morning, which was also the low. If bulls were able to defend that, what is this candlestick pattern called? सोचो, नहीं याद आ रहा. Inverted hammer. If you find inverted hammer at the end of a bull run on the top, that shows a very high likely of a reversal and fall from there. However, if you find inverted hammer kind of a pattern at the end of a fall, समझ में आ रहा है? Then it is most likely a possibility. I'm using the word possibility. Understand one thing. Nothing is guaranteed in the market. Don't tell me, but you said that. Come on, use some brains. Most likely, bulls will try to take this up tomorrow.
Why? Because while they won, and they won with a thin margin, they were able to defend their open. But the reality is they won the game today. It was not, their open wasn't touched by the bears. समझ में आ रहा है कुछ? ये हुआ है आज. Now, tomorrow. Now, I had asked this question um, for the elite participants in an internal poll asking, what did I ask? In the morning at open, Nifty could be green, red, or I don't know. Many of you said, 80% of you said it would be red. Maybe you're right. But the chances are at open at 9:15.00, it could be green because bulls have just started winning this game. Next question. You will panic if you are holding puts. I know that. Nothing to panic. If you're in a positional trade, why should you panic? Because the fall is not over as yet. Because the trend is still down. But for tomorrow morning at open, there is a decent possibility that we may see Nifty in green, not red. Other ways also possible. See, possibilities exist both ways. But going by the analysis of what happened today, आज bears हारे हैं, and they have won by a very thin margin, lost by a very thin margin. Who has won? Bulls. Once again, they have been able to protect their open level. This inverted hammer is the first hint of the victory of the Bulls, even if it is a temporary victory. But आज का मैच जीत गए वो. Maybe they won it with a, in the penalty shootout, but they did win the match. It was a tough call. If you have understood this, you would from next time not make mistakes in loading up your puts at on a day like this. I have puts, positional puts, but I have only 20 or maybe a little lesser percentage of my real position that I normally carry. Why? Because if it doesn't work out, maybe tomorrow if we have a gap down instead, who knows? Market to market है ना. वो किसी का किसी के बाप की नहीं सुनता, वो हमारी क्या सुनेगा. So if it opens in red and if it opens gap down, my trade is still on. However, if the market starts going up again, there is some level where it will reach before it starts finding resistance again. That is the place puts will be much cheaper. Why? Because the market is going up. Calls will go up, puts will go down. Simple logic. Since, in fact, puts will go down much faster, but and calls will go up much slower. ये बाद की बातें, ये समझ नहीं आएंगी आपको. But logic ये है. Since the put will go down much faster, I will have the availability of my puts at deep discount. Diwali sale lag jayegi. And that is where I would tank up my positions. Every resistance level, I would like to tank up my positions. That's how positional trades are played out. Not that कि जी आपके पास 5 लाख है और आपने 5 लाख डाल दिया. नहीं होता ऐसा. कई बार समझाया मैंने कि do not make all your position at one time. थोड़ा थोड़ा निबल करिए. Keep yourself nimble and agile.
So your positions should be nibbled, not eaten like a chunk. You'll be thrown out of the market in no time if you do not understand this subtle nuance of playing the market. So I'm holding very little positions to ensure that if it continues going down, I'm still in position. I'll tank it up at an appropriate time later. But right now, my risk reward was not really in great favor of carrying lots of puts. So I've been able to um, book out a good portion of my positions in green, and I'm holding small positions. Now, coming back to this, where will market go tomorrow? Wherever it goes, where is the first resistance it is likely to face? Okay, let me draw some more things for you. देखिए, try to understand the ये लो क्या है? एक, दो, तीन, चार, पांच, छ. What am I doing? I'm marking all the zones which are resistance zones for the up move. Having said that, now look at this. Oh, ये रुक नहीं रहा है. Just give me a second. Okay, here we are. What am I trying to explain here? When today the market was wanting to move up, what came up as a resistance? The low of 18th October. It just about managed to cross this. Today it is closed below the low of yesterday, 22nd, Tuesday. So the first resistance it will get is here, 24, 445. Second resistance, 24, 567. Third resistance, here, 24, 604, जो कि आज का हाई है. Then this level, this, and so on. Do you understand what I'm trying to say? So there are multiple resistances on the way up. When there are so many uh, defenders standing here, it is difficult to go past all this unless until the conviction and the strength is very high to the next key level of our this line. यहां तक नहीं जाएगा. मैं अभी रिट्रेसमेंट पे भी आता हूं, but I'm giving you the finer nuances of this. And this is where our pivot line is about 24,900 के आसपास. ये याद रखिएगा, ये लेवल. Now draw, if you understood all this logic of creating these lines, तो आपको पता है first resistance will be at 445, then at 567, then at 604. तो जो most logical target होगा वो 604 होगा because that is today's high. That means that is the retracement of the complete fall from today's high if it goes up and trades here. Okay, let me remove all these to make it cleaner. And ये ना ऐसे कोई समझाएगा नहीं आपको, क्योंकि इसमें बहुत टाइम और पेशेंस लगता है. इनफैक्ट आधे लोगों के पास तो आपके पास पेशेंस भी नहीं होगी देख कर ये सुनने की, बट सीखने को यही मिलेगा आपको. ठीक है. नाउ लुक एट, लेट्स लुक एट द रिट्रेसमेंट फ्रॉम हियर टू टुडेज लो. आज का लो ये है ना. हाँ, सॉरी, यहाँ पे लेट मी लॉक दिस. ना लॉक नहीं करता हूँ, एक मिनट दिखाता हूँ. लुक,
In fact, this can be picked up here because ये swing ये था. Ideally, I would have picked up. Okay, let me just hide another retracement so that it does not become a deterrent in explaining what I'm trying to explain. Hmm. इसको भी बंद कर दीजिए. Let's focus only on candlesticks. You would notice I prefer to see only the candlesticks and not the indicators. You know, I, I have a very interesting comment on my yesterday's video asking me to talk about my setup. I'll come to that. Okay. So ideally retracement वो यहाँ से है. And retracement is a very 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 potent powerful tool. तो यहां से है तो इसका आइडियल रिट्रेसमेंट लेवल जो है 852 है. सवाल यह है कि विल इट गो देयर? मे बी नॉट, अनलाइकली. But if you want to get into finer levels, so you pick up another level which from where the market went down. So this is a prominent high where it made a high and after that it could never touch this high and it fell down. Now you see what has happened. Let me zoom this in so that you can get better clarity on this. This was the first level. इसको भी हटा देते हैं, ये पहले वाली लेवल लगी हुई है. हाँ, this was the first level where it touched and it faced the resistance. All in elite group who are watching this, जो मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं, उनको पता है कि ये लेवल क्या है और क्यों इंपॉर्टेंट है. आज ये यहां तक गया और गिर गया, लेकिन लो प्रोटेक्ट कर गया. दिस इज व्हाट आई बीन एक्सप्लेनिंग. नाउ कल क्या हो सकता है? टुमारो इट कैन अटेम्प्ट दिस अगेन, इट कैन अटेम्प्ट दिस, इट कैन अटेम्प्ट दिस. This is a very, very strong resistance, 24,806 as per this retracement. Now let me go to a finer level of this. कैसे देखूंगा मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम में बताता हूँ. छोटे टाइम फ्रेम ये देखिए, ये मैंने कल भी बताया था, मैं दोबारा बता देता हूँ. ये एक क्लियर कट गैप है. 18 अक्टूबर की मॉर्निंग में गैप डाउन हुआ था और ये गैप डाउन, ये क्लियर कट गैप है. और ये जोन क्या है ये देख लीजिए, समझ लीजिए इसको. 694, 24694 और हाई क्या है 744. ये एक ऐसा जोन है जहां पे बहुत से सेलर्स बैठे हैं बिकॉज दे वांट टू सेल एट एनी कॉस्ट. दैट इज द रीजन व्हाई दे वर गैप डाउन. आप कहेंगे तो गैप भर गया था. हाँ, भर गया था. दिस इज व्हाट आई यू हैव बीन टोल्ड. बट ये मायना रखता है, इसके आगे भी रखता रहेगा. ये भर गया था, यही हमें सिखाया गया है. 25 साल से मैं भी ये सुन रहा था, लेकिन जब मैंने देखा कि ये एक ऐसी जगह है जहां प्राइस एक्शन होता है और जहां बायर सेलर बैठे होते हैं, तब आपको समझ में आएगा. ये भर तो गया था, उसके बाद यही तो गैप है जहां से बाउंस लिया था. यही तो गैप है यहां से फिर बाउंस लिया था, फिर यहां बाउंस लिया, ये फिर बाउंस लिया, और यहां से जब ये टूट गया तो यही गैप रेजिस्टेंस बन गया. देख रहे हैं आप? तो ये गैप वैलिड है भाई. ओके, थोड़ा इसको आगे तक बढ़ा लेते हैं क्योंकि हमारे फ्यूचर में भी काम आएगा भाई. ओके, सो ये लेवल्स भी ध्यान रखिए. सो इवन इफ इट क्रॉसेस 592 जो ये लेवल लगी हुई है या 604 जो आज का हाई है, and it even if it crosses this level 663, this is also the zone that could give resistance, and of course 806 and so on and so forth. Look, the upward journey is full of resistances. I don't know how much money the bulls will have in their pockets when they come to the market tomorrow morning, which means that if they come with lots of money, it is any of these levels that the bulls will be able to take the market to. और उसके बाद जब हम
फोर टाइम फ्रेम चार्ट पे जाके देखेंगे, हमको क्या दिखेगा? डेली, आरली, 15 मिनट्स एंड 5 मिनट्स। जहां पे भी हमें एक स्ट्रगल दिखेगा, व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रगल दिखना? हम्म, ये देखो यार, दिखा देते हैं। ये आज का चार्ट है 5 मिनट का। पहले 5 मिनट में मार्केट यहां गया, फिर नीचे गया, ये एक लो बनाया, फिर ऊपर गया, रोते रोते ऊपर गया है, बार बार नीचे गिर रहा था, फिर ऊपर गया। यहां पे आप देखिए, जब ये लेवल आ गई, यहां से लेकर के यहां तक ऑलमोस्ट स्ट्रगल था। लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू। ये हाईएस्ट पॉइंट था डे का, 604। ठीक है, आपको मैं थोड़ा सा दिखाता हूं। आप प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करिए, आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। मार्केट इस जोन में निफ्टी ऑलमोस्ट 11 बजे से लेकर के 12:45 तक स्ट्रगल करता रहा। दिस इज 1 hour 45 minutes। ऑलमोस्ट 2 घंटा मार्केट ने यहां स्ट्रगल किया है। बिफोर एट, 2 घंटा भी नहीं, और उससे ज्यादा, टिल 1:35 उस जोन में स्ट्रगल करता रहा, एंड देन फाइनली इट गिव अप। ठीक है, सो बुल्स वर ट्राइंग टू गिव अ फाइट। ये एक जोन है जहां पे मार्केट ने रेजिस्टेंस तोड़ने की कोशिश की। दिस इज वेयर द स्ट्रगल वॉज विजिबल। ऐसा ही कुछ आपको दिखेगा कल, रोज दिखता है। इन अ फॉल you find where the market is struggling. So similarly, you will find the same thing kind of here, then here, and so on and so forth. जब भी ये स्ट्रगल दिखता है, फाइंड आउट द नियरेस्ट लेवल जहां पे आपको लगता है कि अब मार्केट टूट रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू सी दिस वाज द हाई इट वाज मेड, इट हैड मेड, एंड उसके बाद ये यहाँ पे टूटा, उसके बाद फिर दोबारा उसने अटेम्प्ट किया, बट द अटेम्प्ट कुड नॉट रीच द प्रीवियस हाई। दिस वाज द ऑल टाइम, दिस वाज द डेज हाई, and this was the second attempt of the day's high, and then the market fell. Somewhere here, when the market trend on even on 5 minutes or 15 minutes starts getting negative, that is where I will start adding up my puts. There is a fine science beyond that which the elite group knows, but for you who are not initiated, you can use this as a ballpark figure to add positions. Don't ask me to give out calls, I do not. बट आई कैन एक्सप्लेन यू कि कहाँ पे आपको पोजीशन बनानी चाहिए या ऐड करनी चाहिए, तो ये वो जगह है। ऐसा ही चार्ट आपको करीब करीब कल दिखेगा। व्हेन यू सी दैट, दैट इज द प्लेस टू बी केयरफुल। एंड इफ यू सी, दिस इज द सेम लेवल इन इंट्राडे चार्ट, वही 694 और 744। ठीक है, सो मोस्ट लाइकली इट विल फाइंड रेजिस्टेंस between today's high and this zone. सो ब्रॉडली ये 700 के आसपास का जोन है, प्लस माइनस 20-30 पॉइंट्स, 40 पॉइंट्स ब्रॉडली। सो ये एक लेवल है जहां पे आपको रेजिस्टेंस मिल सकती है, एंड दैट इज वेयर आई विल गेट पुट्स एट अ फार चीपर प्राइस। दिस इज वेयर आई वुड लाइक टू एड पुट्स। समझ में आ रहा है आपको? आप जो गैम्बल गैम्बल खेलते हैं ना कि यार यहां दिल कर रहा है, मुझे लग रहा है मार्केट गिरेगा यहां से, लग रहा है नहीं, देखो चार्ट पे क्या हो रहा है। लगने से नहीं होता है। साइंटिफिक एविडेंस ढूंढो, कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढो, समझो उसको, फिर ट्रेड करो। आई नो एवरीबडी हैज मनी इन द पॉकेट, बट जस्ट हैविंग मनी इन द पॉकेट डज नॉट मीन यू विल विन द गेम। ये वो वाला गेम नहीं है मेरे पापा जी के पास बहुत पैसा है। ये वो वाला गेम है कि आप कितने अक्लमंद हो। ठीक है, लॉन्ग वीडियो हो गया मुझे पता है, थोड़ा सा, बट इसको समझना जरूरी है कि कल कहां तक मार्केट जा सकता है। कमिंग बैक टू द 4 टाइम फ्रेम चार्ट, ये हो गया। बाय द वे, आज 1 बजे टाइम साइकिल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इट वाज अ गुड टाइम फॉर मार्केट टू कंसिडर गोइंग अप,
बट इट डिड नॉट, यहां पे ये ऑन द कॉन्ट्री गिर गया। कल बैंक निफ्टी के लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम है, एंड दैट टाइम इज एट 9:15 AM। बैंक निफ्टी सारा दिन कंसोलिडेट किया है और हो सकता है कि कल ये स्ट्रॉन्ग अप मूव दे सकता है, हो सकता है ना भी दे, मतलब देर इज नो गारंटी, बट टाइम इज कंड्यूसिव टुमारो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, and for heaven's sake, please don't take it as a gospel truth. I'm just giving you what I analyze. That's my way of analyzing. It may be different from yours, or it may not work out, which is okay. Nobody's 100% accurate in this. So this is the nutshell, ladies and gentlemen. This is how I see. There is a possibility of, at the time of market opening, we may see a green candle, because bulls would still like to capitalize on their today's win. But वो कितना जी पाएंगे? हिंदी में कहावत है ना, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। तो को कब तक ऊपर जा पाएगा मार्केट पता नहीं, बट कोशिश तो करेगा, ऐसा लगता है। ठीक है, दैट्स ऑल आई वांटेड टू से टुडे। थोड़ा वीडियो लॉन्ग जरूर है, बट कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है मैंने, और होपफुली इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा। एक बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे कमेंट आया है लास्ट वीडियो पे। हेलो सर, कैन यू मेक अ वीडियो दैट इज योर शट अप नहीं सेटअप है यार। Okay, whatever indicators, or I hardly use any indicators. I'm more focused on price action, and I look at the open, high, low, close, all the settings, and I have भाई मेरी यही सेटिंग है और कुछ नहीं है। And I have 50K, how much daily risk to reward? भाई अगर आपके पास 50K है तो आप ट्रेडिंग छोड़ दो, क्योंकि ये एक नशा है और आपको समझ आएगा नहीं, आप रैंडम ट्रेड करोगे और लॉस करके बैठ जाओगे। भाई देखो, आपको अच्छा नहीं लगेगा सुनने में, बट रियलिटी ये है कि अगर आपके पास 50K है तो आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए, आप उसको बचाइए, थोड़ा से और पैसे इकट्ठे कर लीजिए फिर करिएगा, क्योंकि लॉस हो सकता है। हाँ, अगर आप जिद करते हो पूछने कि भाई हाउ मच शुड बी माई डेली रिस्क टू रिवॉर्ड, आपकी ट्रेड जब आप कोई भी पोजीशन ले लेते हो उसमें जितना भी पैसा लगता है उसका 10% से ज्यादा आपको लॉस नहीं करना चाहिए एक दिन में। ये अगर आप हम दूर रख लेंगे तो आप लगातार 10 लॉस करोगे 10-10% के, तब आपका 100% कैपिटल खत्म होगा। तो 50,000 के हिसाब से 50,000 का 10% है 5,000। तो 5,000 से ज्यादा की आपकी ट्रेड नहीं होनी चाहिए, और वो लॉस नहीं होना चाहिए उस 5,000 का 10%, यानी कि 500 रुपए से ज्यादा आपका लॉस होना नहीं चाहिए। भाई ये बहुत छोटा सा अमाउंट है, इतने में ट्रेड नहीं होती है, इतने में ट्रेड नहीं होती है, थोड़ा सा ख्याल रखो। व्हाट ऑल डेटा पॉइंट समथिंग ग्लोबल निके, नहीं मैं नहीं करता हूँ यार ये सब कुछ। आई डोंट वॉच न्यूज, आई डोंट वॉच, एट मोस्ट आई वॉच गिफ्ट निफ्टी इन द मॉर्निंग, दैट टू अराउंड 8:39, उससे पहले भी नहीं देखता हूँ। मेक टू वीडियोस क्या करूंगा यार, दो वीडियो बनाकर, ये सब कोई जरूरत ही नहीं है। इंडिकेटर मैंने बोला ना, मैं यूज ही, आई हार्डली यूज एनी इंडिकेटर। इफ एट ऑल आई यूज, आई माइट यूज पिवट पॉइंट्स मे बी, एंड कपल ऑफ अदर्स, बट वो भी आप जरूरत तब पड़ती है जब आप उसको फाइन ट्यून करना चाहते हो, अदरवाइज रिट्रेसमेंट्स आर गुड इनफ। सेकंड वीडियो ऑन हाउ टू यूज ओआई पल्स डेटा पॉइंट्स, आप ओआई पल्स के उस पे जाइए ना, होम पेज पे, वहां पे सारे वीडियोस मिलेंगे आपको। मेरा वीडियो क्या हेल्प करेगा आपको? बट एनीवे, थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड अफेक्शन, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर लव। प्लीज मेक दिस वीडियो वेरी हेल्पफुल फॉर मी। भाई हेल्पफुल जो मैं, आप वो समझिए जो मैं समझा रहा हूँ, और आपको पैसे उससे बन सकते हैं। जो आप बता रहे हैं वो मैं नहीं करता हूं, तो मैं क्या बताऊं उसके ऊपर, क्या वीडियो बनाऊं? ठीक है, अगर आपको मेरा एफर्ट से आपको कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज लाइक दिस, कमेंट ऑन दिस, सब्सक्राइब ऑन टू दिस चैनल, एंड ऑल्सो शेयर इट इन योर नेटवर्क। मैं इससे ज्यादा और क्या बोल सकता हूँ? पैसा तो मांग नहीं रहा हूं मैं वीडियो देखने का, बट आपको सिखा रहा हूं। तो आपको अगर पसंद आता है तो दैट इज योर currency that I would love to accept, which is your like, comment, share, and subscription. Thank you so much. Have a nice day tomorrow, and go green. Be very clear about your RNPS. Good night.